Hello. Now, today our topic is pollination. What is the pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anthers to the stigma. Is called pollination, and it is of two types: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination and cross-pollination. Self-pollination means the transfer of pollen grains from anthers to the stigma of the same flower or the flower of the same plant is called the self-pollination. And self-pollination is of two types: autogamy and deuterogamy. Autogamy means pollination of anthers by its own flower, means the transfer of pollen grains from anthers to stigma of the same flower is called the autogamy. And the transfer of pollen grains from anthers of the stigma of the flower of the same flower not or the flower of the same plant is called the deuterogamy. Adaptation or the consequences of the self-pollination, and it is are of two types: homogamy. Homogamy means where there is a condition in which anthers and stigma of a flower mature at the same time. So there is the reason of self-pollination, because when both are mature at the same time, when stigma is receptive at the time anther shed and their pollens. So there is no chance of anywhere of cross-pollination. It is a self-pollination. Cleistogamy means the production of flowers which never open, means the pollination of flowers in which flowers which are never open, and it is in those type of flowers which is have the subterranean and the underground rhizome. Here we can say the cleistogamy फ्लावर्स में क्या होता है कि जब पॉलिनेशन होता है तो वो जो फ्लावर ओपन ही नहीं होता है, फ्लावर के अंदर ही अंदर पॉलिनेशन हो जाता है. तो द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ऑफ द एंथर्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा of the same flower but in the bud condition, but it is not on the flower, it is not in the flower, and it is facultative because where there is cleistogamy occur, there is a chasmogamous flower also occur. Chasmogamous flower means the flower is very normal, and in some cases such as sexy flora and salvinia and other type of flower which has a subterranean and underground rhizome have the cleistogamous flower which never open their buds, and pollination occur in the closed bud. And when the closed when the and where there are the chasmogamous flower in these flower also, chasmogamous flowers are attractive and charming and colorful and are able to self pollination, able to do self pollination, and this type of pollination is called common pollination. So that we can say the cleistogamous flower are facultative. फैकल्टेटिव वाई, बिकॉज इसमें ये ऐसा चांस है कि ज़्यादातर इट इज़ अ रेयर टाइप, क्लीस्टोगेमस फ्लावर इज ऑफ रेयर टाइप एंड एक्सक्लूसिवली we can say self pollination leading to the self fertilization, and self fertilization has the advantages of greater reliability, particularly where there the individual of species are uncommon and having a long distance, separated by long distance, and is dependent on the and self pollination. In self pollination there is a important thing: self pollination has no external agency for the pollination. There such as air, wind, water and other abiotic factors, means जिस पर कि कहना चाहिए कि abiotic factors depends on abiotic factors
So there is no any chance to the deliver their open for the external to the deliver the pollen. Okay, है ना. So self pollination is of two types. Self pollination is of two types: autogamy and cleistogamy. गिटोनोगेमी एंड ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी में ऑटोगेमी हो चुका एंड गिटोनोगेमी हो चुकी है ना, कि देयर इज ए ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी हो चुकी. कि एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. ऑटोगेमी मीन्स द पॉलिनेशन इज बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर इज बाय ओन फ्लावर. ऑटोगेमी. गिटोनोगेमी pollination of the flower by मतलब pollen यानी कि pollen grains of the flower from the anther transfer to the stigma of the flower of the same plant. Geitonogamy. But the contrivances and adaptation is of two types: homogamy and cleistogamy. Homogamy where there is a pollination, where there in this condition, homogamy में इस condition में जो self pollination है उसमें the कंडीशन ऐसी होती है कि एंथर और स्टिग्मा राइप मेच्योर जो होते हैं वो एट द सेम टाइम पर होते हैं. और क्लिस्टोगेमी, और इसमें कोई फिर ऐसा चांस ही नहीं रह जाता क्रॉस पॉलिनेशन का कि जब दोनों ही मेच्योर एक ही टाइम पर है. मतलब पॉलिनेशन में स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव एट द टाइम व्हेन दे आर द पॉलन इज रेडी टू शेड देयर पॉलन ग्रेन्स. सो द पॉलन नहीं, वो एंथर आर रेडी टू शेड देयर पॉलन ग्रेन्स, है ना. तो इसीलिए ये होमोगमी बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन है, रिलायबल सेल्फ पॉलिनेशन है. इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि एडेप्टेशन से में होता है. क्लिस्टोगेमी के बारे में बता चुके हैं कि क्लिस्टोगेमी में नेवर ओपन बर्ड्स एंड इट्स में बर्ड्स क्लोज बर्ड में इसका पॉलिनेशन होता है. और ये एक कहना चाहिए कि फैकल्टेटिव टाइप इसका है और चास्मोगेमस फ्लावर्स भी होते हैं. नाउ वी कम टू द क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में the transfer of pollen grains from the anther, the transfer of pollen grains from the anthers from the stigma of the other plant. या फिर ये कहना चाहिए कि transfer of pollen grains from the anther of the flower of one plant to the stigma of the flower on the another plant is called the cross pollination. Self pollination is occurring in the bisexual and unisexual flowers, and cross pollination occur in the unisexual flowers, because there is no chance to get the other partner to get pollination if there is a unisexual flower. So advantage, but here is the advantages of genetic recombination. Here the contrivances and adaptations में हम बात करेंगे self sterility and self incompatibility की. Self sterility की means है कि when the stigma become receptive, the pollen grains is not shed their pollen grains, anther is not shed their pollen. So one thing is sterile and one is fertile. So this condition, so the condition is in such a way that there is no both of them are not ripe at the same time, and so there is no not occur pollination at the same time. Pollination at such way that it is the self pollination. So there is a cross pollination occur. Where there we talk about the self incompatibility. Self incompatibility genes is self sterility genes where pollens of a flower do not grow or grow very slowly, and if they fall on the stigma of the same flower, so as to prevent self fertilization, है ना. और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है, वहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज चेक डाउन इन द स्टाइल. They enter into the stigma and go through the style, but they check down the style in the style. So it is governed by the self incompatible genes.
And such biochemical studies reveal that self-incompatible genes have shown that show the recognition rejection process, recognition rejection response in some cases. Recognition rejection response means the स्वीकृति से अस्वीकार कर देना, स्वीकृति से यानी कि आपने एक्सेप्ट, आपने मान करके उसे रिजेक्ट कर दिया. आपका स्टिग्मा, pollen grains go through the stigma to style, but they do not grow a pollen tube into the style, and it is the recognition rejection process. And also it is yes, in some cases involve an interaction between the proteinaceous substance. It is the interaction also, the interaction of the proteinaceous substance and critical pellicle of the stigma is also play an important role in the self-incompatibility. Because in some cases there is the critical pellicle is very hard and not aqueous surface है ना, so there is no pollination occur. और प्रोटीनेसियस सब्सटेंस है, जब जो प्रोटीनेसियस सब्सटेंस अगर इन द pollen grains is there where there is no प्रोटीनेसियस सब्सटेंस ना, so there is no power of pollination है ना, power of pollination become low. And second adaptation, the second contribution is the dichogamy. डाइकोगेमी में हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि जब कंडीशन में एंथर राइप होता है तब स्टिग्मा राइप नहीं होती है. जब स्टिग्मा मैच्योर रिसेप्टिव होती है तब पॉलन ग्रेन्स सेड नहीं होते हैं. तो इसमें जब एंथर्स at first anthers are ripe and stigma is not receptive, so we can say this condition is the protandry. And when the dichogamy, when the protandry condition कुछ होती है, इसके अपोजिट कंडीशन आती है which is the protogyny. when the protogyny means होता है कि जब stigma become receptive first, at first stigma become receptive but the pollen grains doesn't shed, the anther doesn't shed anthers, pollen grains. So for इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनी. एंड उसके बाद में आते हैं हार्कोगेनी पर. हार्कोगेनी मीन्स होता है कि इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल है वो इन सच दैट वे है कि हमारी सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं हो पाता है. तो इस वजह से ही हार्कोगेनी में सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है. हेटेरोस्टाइली मीन्स देयर आर टू टर्न्स. हेटेरोस्टाइली का लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स एंड शॉर्ट स्टाइल फ्लावर. Where there is long style flowers, so it is called long style flower, but it avoid self pollination because जब pollens जो हैं वो जब छोटे होंगे और स्टाइल जब बड़ा होगा तो वो किस तरीके से अपना pollen grain shed करेगा, तो उसमें pollen grains में pollen grain shed नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से pollination नहीं हो पाएगा. In other word, you can say there is no self pollination, either there is cross pollination होगा. In heterostyly where families show these condition, so in other words we can say heterostyly means short style flowers होते हैं. तो short style flower में जब स्टाइल अगर शॉर्ट होगा और पॉलिन उससे भी शॉर्ट हुआ तो कोई बात अलग पड़ जाती है. लेकिन अगर शॉर्ट स्टाइल फ्लावर है और पॉलिन ऊपर है तो पॉलिन ग्रेन्स का जो पार्ट है एंथर ऊपर है तो पॉलिन ग्रेन एंथर साइड देयर पॉलिन. सो दिस इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन. लेकिन यहाँ पर पॉलिन ग्रेन्स ऊपर नहीं, यहाँ पर जो फ्लावर जो होगा वो इस तरीके से होगा कि वो स्फेरिकल होगा, लार्ज होगा, जो कि स्टाइल पर स्टिग्मा पर गिरेगा तो लेकिन वो वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा. तो इसमें एक वर्ड आता है legitimate. Illegitimate means where there is poor pollination and poor adaptation, where there is a poor result of pollination is called the illegitimate, and legitimate where there is a successful pollination. It's okay.